Assalamu alaikum, my little engineers. How are you all? I hope you all are doing fabulous. Okay, so before I start my lecture today, let me remind you that this is the prosperous month of Zilhajj. So I want you all to do as many ibadat as you can. आप लोगों ने बहुत सारी इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है वक्त की पाबंदी के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बिल्कुल भी नमाज़ नहीं छोड़नी। तमाम कुरान बच्चे जो हैं वो कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत करेंगे, जितनी आप लोगों से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उतनी तिलावत करनी है और जो है तकबीरात पढ़नी है, रोज़े रखने हैं। एंड येस ऑफ कोर्स रिमेंबर योर टीचर्स, द होल स्टाफ ऑफ योर स्कूल अल मुर्तज़ा एजुकेशन सिस्टम, and sacrifice in the name of Allah because it is neither their blood nor their meat that reaches Allah, but it is piety from you that reaches Him. Okay, so let's start today's lecture. Today we are going to discuss about generations of computer. You have remembered that in the previous class we have started the history and development of computers. In that we have already discussed about ages of computers. Today we are going to start the second part, which is the generations of computer. Okay, so there are 5 generations of computer. We will discuss all of them. The first generation of computer. Okay, as you can see, there is the duration mentioned for the first generation of computers. You guys have to remember the duration of each generation. Okay, so the first generation is from 1940 to 1956. Main features, the main specialties of that generation were: the major innovation was vacuum tubes. As you all can see in this picture, there are some of the vacuum tubes given, and the magnetic drums were used for the main memory. After that, for the external storage we used punch cards. Input output devices were punch cards and papers. जो normal हमारे papers होते हैं उस पे हमारा output होता था. The low level and machine languages were used. There was no operating system in the first generation. Human operators to set switches, जो इंसान ही यूज़ करते थे, मैनुअली यूज़ किया जाता था, यानी कि हमें जो स्विचेस होते थे ऑन करना है ऑफ़ करना है जैसे भी करना है, उसके अंदर जो सिस्टम होता था सारा वो ह्यूमन ऑपरेटर्स थे, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. ओके, द साइज वर सेम एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स विच इज़ वेरी लार्ज. Okay, some of the examples are ENIAC, EDVAC, UNIVAC and Mark I were some of the major inventions of this generation. Okay, there are some disadvantages and advantages of each generation. We are going to discuss them as well. Okay, so let's first start the advantages of first generation. So first advantage was that vacuum tubes were used and as electronic component के लिए vacuum tubes use किए जाते थे. The second one is electronic digital computers were developed for the first time. ये first time था जब electronic digital computers develop किए गए थे. These computers were the fastest calculating devices of their time, और उस वक्त के ये fastest calculating devices थी. Computations were performed in milliseconds. कितने फास्ट थे कि जो उनके अंदर जो सम्स हो रहे होते, जो computations हो रहे होते थे, वो कब कितनी टाइम में होते थे? मिली सेकेंड्स में, विद इन मिली सेकेंड्स, यानी कि हमें पता भी नहीं चलता था, इतनी तेज़ी से होते थे. Okay, let's look the disadvantages of first generation. Okay, as I have told you already that the computers of the first generation were too large in size. बहुत बड़े साइज़ के होते थे, which is a disadvantages. सेकेंड वन, दे आर अनरिलायबल, यानी कि उन पे हम भरोसा नहीं कर सकते थे, वो गलत आंसर्स भी दे सकते थे, हमें बीच में बंद भी हो सकते थे, तो दे वर अनरिलायबल. ओके, देन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स. ऑब्वियसली बहुत सारे इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स जब लगे हुए होंगे तो जो है जो हमारे कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाते थे, गर्म हो जाते थे, विच इज़ अ डिसएडवांटेज. क्योंकि जो भी कोई हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना ज़्यादा वो हीटअप होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करती है और एनर्जी उतनी ज़्यादा डिसिपेट करती है. ठीक है, पावर डिसिपेशन होती है. सो बिकॉज दे वर हीटेड, तो एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड. हमें फिर जो है एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ते थे टू कूल देम डाउन. फ्रिक्वेंट हार्डवेयर फेलियर्स, उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स थे, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे, वो जो है बीच में मतलब काम करना बंद कर देते थे, तो दैट इज़ वाई कांस्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड. तो जो ये कंप्यूटर्स थे उनको कांस्टेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि उनको मुस्तकिल सही करना पड़ता था, विच इज़ कॉस्टली एज वेल. कमर्शियल प्रोडक्ट वॉज डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली. हम कमर्शली
जो है इन कंप्यूटर्स को उस वक्त नहीं कर सकते थे क्योंकि वो मुश्किल भी था और महंगा भी बहुत था. सो दैट इज़ वाई देयर वॉज लिमिटेड कमर्शियल यूज़ एंड द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन वर नॉन पोर्टेबल. यानी कि पोर्टेबल मीन्स कि हम उस डिवाइस को, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इतने बड़े होते थे कि उनको मूव करना बहुत मुश्किल था. Okay, now let's move on to the second generation of computer. The second generation of computer is from 1956 to 1963. You guys have to learn the durations of each generation. Okay, so the main features were the major innovation was transistors. You guys can see some forms of transistors in the given picture. The main memory, RAM and ROM were used for the main memory. RAM stands for random access memory and ROM stands for read-only memory. After that we have magnetic tapes and magnetic discs for external storage. Magnetic tape, punch card and paper was used for output, and magnetic tapes and punch cards were used as input devices. Assembly language, some high level languages like BASIC, COBOL, Fortran were used in the second generation. Okay, there was no operating system. Human handles punch cards. Size, mainframe same as the first generation. Size में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, थोड़ा बहुत बस फ़र्क था. और जो है IBM 1400 series, IBM 1600 series, UNIVAC 3, NCR 300 were some of the major inventions of the second generation. After that we have to look at some of the advantages of second generation. Okay, so the advantages were they are smaller in size as compared to first generation. First generation के जो computers थे, मैंने अभी आपसे कहा कि उनके comparatively वो छोटे साइज़ के थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. ठीक है, मोर रिलायबल. फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स हमारे इतने रिलायबल नहीं थे, उनके आउटपुट्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते थे, बट सेकेंड जनरेशन में आके रिलायबिलिटी बेहतर हो गई. आफ्टर दैट लेस हीट जनरेटेड. जितनी हीट फर्स्ट जनरेशन में होती थी हमारी क्रिएट, उतनी नहीं होती थी, इसमें कम हो गई थी. प्रोसेसर ऑपरेटेड इन माइक्रोसेकेंड्स स्पीड. जो प्रोसेसर था हमारा वो माइक्रोसेकेंड्स की स्पीड में चलता था, हमें आउटपुट देता था. लेस हार्डवेयर फेलियर. जो हार्डवेयर डिवाइसेस थे हमारे वो जो है ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली काम करते थे, फेलियर्स नहीं होते थे ज़्यादा. बेटर पोर्टेबिलिटी. ये इस काबिल तो थे एटलीस्ट कि इनको फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में कि हम इनको मूव कर सकते थे कमर्शियली, जब भी हम इसको कमर्शियली भी यूज़ कर सके थे. डिसएडवांटेजेस. ओके, सो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली हीट कम तो थी बट हीट थी, तो ऑब्वियसली हमें जो है एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी टू कूल देम डाउन. एंड दैट इज़ वाई फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस भी हमें रिक्वायर्ड थी क्योंकि हमारे जो हार्डवेयर फेलियर वगैरह कम तो हुआ था मगर अभी भी था, तो मेंटेनेंस हमें कॉन्स्टेंटली रेगुलर बेसिस पे चाहिए थी. कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज कॉस्टली. कमर्शियल प्रोडक्शन जो थी वो कॉस्टली थी अभी भी. Okay, so I stop here. This is it for this lecture. We will discuss the remaining 3 generations in the next class. Okay, so I hope you all will follow my instructions. I will give you the notes as well. You guys have to learn from the notes. Okay, एंड मैंने आपको कहा था कि साथ साथ अपनी लर्निंग रखते जाइए, तो आप लोग आई होप साथ साथ लर्न कर रहे होंगे. ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट होगा. ठीक है, तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए. आई विल टेक योर टेस्ट आफ्टर ईद. ओके, सो सी यू नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड रिमेंबर योर टीचर्स एंड योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.